Hello everyone. In today's class, we are going to start the chapter, the Sermon at Benares. Now, what do you understand by sermon? Sermon is religious preaching, or you can say some message that a person wants to give you. So, this chapter is all about the life of Gautam Buddha, the early life of Gautam Buddha. And in this chapter, also, we are going to read a story related to Kisagotmi. So, before starting the chapter, let's read about the author who has written this story. So, the author of this story is Betty Renshaw. She was born in Renshaw family on September 3, 1927. She completed her graduation from Shannon High School and further secured the Bachelor of Arts degree from Mississippi College. So, this is the information about the author who has written this chapter. Now, let's get started the chapter itself. So, the chapter starts like this. Gautam Buddha, who was born in 563 BC and died in 483 BC, began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. So basically, he was born in a royal family which was situated in northern India, and his name was Siddhartha Gautama. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. So, when he was 12 years old, then he was sent for his study. Now, that time, you know, that studies was done at Gurukul. तो उस टाइम पर स्टडी गुरुकुल में होती थी और जो वहाँ पढ़ा जाता था वो थे सेक्रेड स्क्रिप्चर्स. सेक्रेड स्क्रिप्चर्स आप जानते हैं, होली स्क्रिप्चर्स जो हमारी होती है, बुक्स होती है, उनको पढ़ा जाता है. सो एट द एज ऑफ 12 ही वाज सेंट फॉर दैट. Up after 4 years, he came back and he got married. Okay. Or finally, they had a son and lived for 10 years as befitted royalty. तो जब वो वापस आए उसके बाद उनकी मैरिज हुई एंड फॉर 10 years ही वॉज लिविंग रॉयल लाइफ, है ना. बी फिटेड का मतलब क्या होता है? सूटेबल. जो रॉयल फैमिली के लोग जिस तरह की लाइफ स्पेंड करते हैं, ही वॉज लिविंग दैट लाइफ. अब एट अबाउट द एज ऑफ 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. Now, what happened at the age of 25? Before this one, Siddhartha Gautama didn't know about the sufferings. He was protected. He was unaware. So heretofore means before this. Shielded. Shielded means protected. So at the age of 25, what happened? By chance, he came across a sick man. Sick man आप जानते हैं, कोई बीमार आदमी. Aged man. Aged man means an old man. And funeral procession. Funeral procession क्या होता है? जो last rituals होते हैं after the death of a person, that is called as funeral procession. And finally a monk begging for alms. और finally उनको कौन दिखाई दिया? एक monk, एक साधु जो क्या कर रहा था? begging कर रहा था. ठीक है. तो इसके पहले उन्हें नहीं पता था कि सफरिंग क्या होती है, सिकनेस क्या होती है और ओल्ड एज क्या होती है. नाउ फाइनली एट द एज ऑफ 25 ही सॉ ऑल दीज सफरिंग्स. अब वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए इन चीज़ों को देखकर, बिकॉज ही वॉज अनअवेयर of all these things. उन्हें नहीं पता था कि इस पूरे वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा sufferings हैं. Okay, so these sights so moved him that he at once went out in the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. जब उन्होंने सब देखा, then he was so much disturbed that immediately he decided to get the knowledge and truth. Okay, he wanted to know that why everybody is suffering, क्यों इतनी problems हैं, क्यों इतनी sufferings है, वो इनका reason जानना चाहते थे और इनके answer भी जानना चाहते थे. So what he decided to get enlightenment. Enlightenment क्या होता है? Getting the spiritual knowledge. Okay, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब ही वुड लीव दिस रॉयल लाइफ बिहाइंड. जितनी भी लग्जरी है, कंफर्ट है, वो सब को छोड़ देंगे और ही वुड बी अ मंक. सो फाइनली ही डिसाइडेड टू बी अ मंक एंड ही लेफ्ट हिज रॉयल फैमिली. ठीक है, पैलेस उन्होंने छोड़ दिया, रॉयल फैमिली छोड़ दी और निकल गए. किसके लिए? किसकी सर्च में? वो निकले हैं अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज के सर्च में. फाइनली
He wandered for 7 years, finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. अब वो 7 year तक continuously यहाँ वहाँ घूमते रहे, wandering is just moving here and there in search of that knowledge, that spiritual knowledge, okay? और finally वो कहाँ बैठे? Sat down under a peepal tree where he vowed means promised, okay? He promised to stay until enlightenment came. अब उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पीपल ट्री के नीचे ही मुझे बैठे रहना है जब तक कि मुझे जो नॉलेज में सर्च कर रहा हूँ वो नहीं मिल जाती. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree. And finally, he was enlightened. He got that knowledge. And after getting the knowledge, he renamed the tree. He gave the name to that particular tree where he was sitting for 7 days. Okay. So the name of the tree was Bodhi tree. Okay. Bodhi tree means tree of wisdom, and began to teach and to share his new understanding. So whatever he had understood, whatever knowledge he had got, he had received. So he started to spread that knowledge. He started to deliver that knowledge to others. Okay. At that point, he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. So finally, everybody started to call him Buddha. Why Buddha? Because Buddha means the awakened or the enlightened, the person who is having all the knowledge. Okay, the Buddha preached his first sermon at the city of Benares, most holy of the dipping places on the river Ganges. Actually, this is river Ganga. So after getting knowledge, Buddha preached, he just delivered his message, whatever the knowledge he had achieved, he started to spread it to everyone, and he gave his first sermon. I told you about sermon. Sermon means the message or religious preaching, okay? And that first sermon was delivered at the city of Benares. You know, it's at Varanasi. Okay, so most holy of the dipping places जहाँ लोग जाते हैं और गंगा नदी में नहाते हैं. Okay, so that sermon has been preserved and is given here. और वही जो sermon है जो उन्होंने first time deliver किया था, that same sermon has been preserved and has been written here. तो यहाँ एक story है. Through that story, Gautam Buddha wants to teach you the most important lesson of the life. और वो लेसन है रिलेटेड टू सफरिंग्स. ओके, इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग. अब इनस्क्रूटेबल क्या होता है? अनअवॉइडेबल. तो यहाँ जो उनका मैसेज है वो है रिलेटेड टू अनअवॉइडेड सफरिंग. अब क्या है अनअवॉइडेड? ऐसी सफरिंग्स जो आप नहीं अवॉइड कर सकते, ऐसी चीजें जो लाइफ में होकर रहती है, जैसे कि डेथ. तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं इसी सफरिंग से रिलेटेड स्टोरी और किस तरह से गौतम बुद्धा ने ये समझाने की कोशिश की है कि डेथ एक इनएविटेबल ट्रुथ है जिसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता. लेट्स रीड दैट शॉर्ट स्टोरी. किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड. तो यहाँ ये स्टोरी है किसा गौतमी की. किसा गौतमी का सिर्फ एक ही बेटा था एंड दैट सन died. Okay, she took the dead child to her neighbors to make him alive. Now Kisa Gotmi was so much disturbed after losing her son that she went to all the neighbors because she wanted to take a medicine to make him alive. Now, everybody knows that this is impossible. She asked for medicine. She was asking for medicine to everyone. The people called her mad. Everybody was calling her mad. सब कह रहे थे कि शायद she had lost her senses क्योंकि उनका जो एक ही बेटा था उसकी डेथ हो गई है. People उनसे sympathy रख रहे थे. At last Kisa met a man. अब लोगों को सिंपैथी हो रही है लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा है किसा गौतमी की, और ये ऐसी चीज है जिसमें कोई आपकी हेल्प कर भी नहीं सकता. At last Kisa met a man. He told her that he had no medicine, but he knew a physician who could give medicine for the same. Finally, after wandering here and there, किसा गौतमी को एक पर्सन मिलता है एंड दैट पर्सन टोल्ड किसा गौतमी कि देखो आई कैन नॉट गिव यू द मेडिसिन बट आई कैन टेल यू अबाउट अ पर्सन हु कैन श्योरली हेल्प यू आउट. ओके, तुम्हारी हेल्प वो पर्सन कर सकता है, मैं उसका एड्रेस दे सकता हूँ तुम्हें. सो किसा गौतमी आस्क्ड हिम टू टेल नेम ऑफ द मैन.
She asked कि प्लीज बताओ मुझे जाना है उस पर्सन के पास में. He told her to go to Sakyamuni the Buddha, and finally that person directed Kisagotmi to Sakyamuni. Sakyamuni भी किसका नाम है? बुद्धा का ही नाम है. Okay. Kissa told the Buddha to give medicine to cure the boy. Now, as soon as Kisagotmi reached Gautam Buddha, उसे डिमांड किया कि भाई please give me a medicine so that I can give that medicine to my son and he can be alive. The Buddha told her to bring him a handful of mustard seed. Now, Buddha didn't tell anything to Kisagotmi. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि can you please bring me a handful of mustard seed. That was so easy. Okay, it must be from a house where no one has died. लेकिन along with this thing, उन्होंने एक condition रखी that this handful of mustard seed should be from the house where no one has ever died. जहाँ किसी की डेथ ना हुई हो. अब गौतम बुद्धा क्या समझाना चाहते हैं ये हमें समझ आ रहा है. ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ किसी की कभी डेथ नहीं हुई हो. ये रियलिटी है. लेकिन किसा गौतमी का मेंटल स्टेटस अभी ऐसा नहीं है दैट शी कुड अंडरस्टैंड दिस रियलिटी. वो इस मैसेज को नहीं समझ पा रही है. सो शी वाज वेरी हैप्पी कि चलो मस्टर्ड सीड ही लेकर आने हैं. किसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस. पीपल गेव हर मस्टर्ड सीड. शी आस्क्ड इफ नो वन डाइड इन द हाउस. तो लोगों से जब उसने पूछा कि I want a handful of mustard seed, so everybody was ready to give her that handful of mustard seed happily. But once Kisagotmi asked if no one died in the family ever, so they told her not to remind them of the deepest grief. तो जब ये क्वेश्चन पूछते तो सबका आंसर यही होता कि हर घर में किसी न किसी की डेथ जरूर हुई है. Up, Kisagotmi could not get the seed from any house. So there was not a single house there where no one had ever died. So finally, Kisagotmi could not get a handful of mustard seed. बहुत easy task था, but that was the most difficult one. नहीं मिला handful of mustard seed. At last, she sat tired and hopeless at the wayside. She was so hopeless. Hopeless because she couldn't get that handful of mustard seed. Okay. Now finally darkness soon fell. It was evening time. उसके बाद में sunset हो गया, darkness हो गई सब जगह. She saw the lights of the city. बहुत टायर्ड थी वो, बहुत होपलेस फील कर रही है और अब पूरी सिटी में क्या हो गया है? डार्कनेस हो गया है. Soon the darkness of the night was everywhere. She considered the fate of man. अब जब किसा गौतमी ने देखा कि किस तरह से लाइट्स फ्लिकर हुई और फ्लिकर होने के बाद फाइनली दे पुट आउट, तो she started to think about the destiny of human being. अब जितने भी पर्सन्स यहाँ पर हैं हमारी डेस्टिनी भी ऐसी है. वी ऑल्सो फ्लिकर आउट जस्ट दैट लाइट एंड फाइनली आवर लाइफ पुट आउट. एंड हो जाती है हमारी लाइफ, फिर कंप्लीटली डार्कनेस होता है. सो शी स्टार्टेड टू थिंक अबाउट द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन बीइंग. शी थॉट दैट शी वाज रियली सेल्फिश इन हर ग्रीव. शी स्टार्टेड टू इंट्रोस्पेक्ट. उन्हें खुद ने ये रियलाइज किया कि मेरा जो दुख है उसमें शायद मुझे ये समझ में ही नहीं आया दैट I'm not the only one who has lost someone. हर किसी के घर में किसी न किसी की डेथ हुई है. Okay, death was common to all. Now yet there lay a path that led man to immortality if he surrendered all selfishness. तो एक तरीका है, हर किसी को डेथ आनी है, हर किसी की डेथ होनी है, बट देयर इज अ पाथ, देयर इज अ वे बाय विच यू कैन बी इमोर्टल. और वो इमोर्टैलिटी का पाथ क्या है? सरेंडरिंग योर सेल्फिशनेस. आप सेल्फिशनेस छोड़ दीजिए. आप इस वर्ल्ड में हैं एंड आफ्टर योर डेथ यू विल बी इमोर्टल. एवरीबडी वुड नो अबाउट यू, दे विल बी टॉकिंग अबाउट यू. लेकिन कब? जब आपने कुछ अच्छा किया होगा. नाउ शी वॉज रियलाइजिंग दिस थिंग कि उसके सन की जो डेथ हुई है तो वो अननेसेसरीली क्यों एफर्ट कर रही है? वो यहाँ से दूसरे वर्ल्ड में चला गया है. ओके, एंड इट्स यूजलेस टू ब्रिंग हिम डाउन अगेन. नहीं ला सकती, यूजलेस भी है और कोशिश भी करना बेकार है. शी हैड अंडरस्टूड. ओके, द बुद्धा टोल्ड हर दैट ह्यूमन लाइफ वाज ब्रीफ एंड पेनफुल. नाउ फाइनली बुद्धा मेड हर अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो जितने भी पर्सन है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन सब की लाइफ क्या है? ब्रीफ है, पेनफुल है. इन दिस वर्ल्ड
Our life is for shorter time duration, and of course it's so painful, it's full of sufferings as well. No one could avoid dying. कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो ये अवॉइड कर सके कि उसको डेथ ना आए. All those who were born want to die one day. So all those who were born here were to die one day. Yes, sooner or later everyone has to die. Young and adult all have to die like the vessels of a potter. Okay, they break after being made as a potter makes some vessels. Okay, और वो जो earthen vessels होते हैं उनकी क्या destiny होती है, at the end उनको टूटना होता है. The same is our destiny. जब से हमारा क्रिएशन हुआ है, जिस दिन से हमारा बर्थ हुआ है, उसी दिन से ये डिसाइडेड है कि हमारी डेथ भी होनी है. Okay, all depart from life. A father cannot save his son. So those who has taken birth, those who are born, they all will die. Okay, a father cannot save his son. All relatives lament deeply when the dead is taken like an ox for slaughter. एक फादर अपने सन की लाइफ नहीं सेव कर सकता. सिमिलरली कोई भी रिलेटिव किसी अदर रिलेटिव की लाइफ को सेव नहीं कर सकता. वाइल दे विल बी लेमेंटिंग. लेमेंटेशन क्या होता है? लेमेंटिंग क्या होती है? लेमेंट करने का मतलब होता है जब आप सॉरो फील कर रहे हैं, जब आप सैड फील कर रहे हैं, ठीक है, वो होता है लेमेंट करना. तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि आप कितना भी लेमेंट कर ले, कितना भी क्राई कर ले, लेकिन एट द एंड यू कैन नॉट सेव एनीबडी फ्रॉम डाइंग. उनकी डेथ अगर डिसाइडेड है तो वो होकर रहेगी. जैसे कि एक ऑक्स होता है ना, जैसे स्लॉटर हाउस में लिया जाता है. स्लॉटर हाउस क्या होता है? जहां पर एनिमल्स आर कट. सिमिलरली वी आर ऑल्सो टेकन टू द डेथ. ओके, so the world is affected by suffering due to death and decay. So this world is full of death and decay. हर किसी को डेथ आनी ही है, हर किसी की डेथ होनी ही है. The wise do not grieve as they know the truth. Yes, those who are wise, those who understand this truth, those who have this knowledge, they don't cry, they don't lament. उनको ये पता है कि ये हमारा ट्रुथ है और इस ट्रुथ को कोई भी चेंज नहीं कर सकता. नो वन विल गेट पीस ऑफ माइंड फ्रॉम वीपिंग और ग्रीविंग. ओके, आप कितना भी सैड हो लें, आप कितना भी रो लें, बट आप अपना पीस ऑफ माइंड नहीं गेन कर सकते. बिकॉज इफ यू आर क्राइंग, इफ यू आर शोइंग सैडनेस, तो क्या होगा? एट द एंड आपका जो मेंटल पीस है वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा. On the contrary, his pain will be greater. And if you will be crying, if you'll be showing your sorrow, that time you will be disturbed और आपका pain और ज़्यादा increase होगा. His body will suffer, obviously. आपको physical problems होंगी. The dead are not saved by expressing sorrows. Obviously, you cannot save any dead person. If you are crying, then too that dead person would not come back. Okay, he who is of the lamentation and grief shall have peace of mind. तो जो भी लोग हैं, he who is of the lamentation, आपको अपने आप को उस सैडनेस से बाहर निकालना होगा. एंड ग्रीफ, वो जो आपका सॉरो है, आपकी ट्रबल है, आपका पेन सफरिंग है, from that you have to come out, because you have to understand कि सफरिंग से कोई डेड पर्सन वापस नहीं आएगा. और वही पर्सन जो इस नॉलेज को जान जाते हैं, जिनको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि रोने से, दुखी होने से nobody is going to come back, तो वही पर्सन पीस ऑफ माइंड को अचीव करता है. One who has overcome sorrow will be free from sorrow and be blessed. Yes, जितने भी पर्सन है, वन हु हैज ओवरकम सॉरो, तो जितना भी आपका लाइफ में दुख है, उससे इफ यू हैव ओवरकम, देन व्हाट विल हैपन? यू विल बी फ्री फ्रॉम सॉरो. आप जितने भी सॉरो है आपकी लाइफ में, उनसे ओवरकम हो जाएंगे एंड योर लाइफ विल बी ब्लेस्ड. So we have read this chapter and hopefully you all have understood what message Gautam Buddha wanted to give you. और शायद आपने भी ये मैसेज गेन किया होगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपको लाइफ में सैड नहीं रहना है, और आपको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि डेथ एक ऐसा ट्रुथ है जो अनअवॉइडेबल है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर.
and thank you for listening.